Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With one more video for ETEA, NTAs, MCAT, NUST and NTS test. I am Ikram. You are watching my YouTube channel English with Ikram. In my last video, I discussed the syllabus uploaded by ETEA on its website. And many students have asked the question that what's about other type of sentences? मैंने उस वीडियो में बताया था कि इसमें use of tense and use of verb. And then use of article, use of preposition, such sort of things were there. तो students question पूछते हैं फिर conditional sentences और बाकी tenses नहीं होंगे. तो when we say use of tense, तो इसमें तमाम किस्म के sentences उनकी मुराद था. जब आप किसी सेंटेंस के अंदर किसी कंडीशनल सेंटेंस की तो जाहिर सी बात है उसमें आपने करेक्ट टेंस यूज़ करना है या करेक्ट वर्ब यूज़ करना होता है. Then it becomes correct type of that particular sentence. तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. You have to study all the tenses. You have to make your concept clear. आपने tenses का concept clear करें. बाकी आपके conditional sentences हैं, interrogative sentences हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो sentences हैं, clauses हैं, different कौन सी clause उसमें कौन सा tense यूज़ करें. Basically वो tense और verb भी होता है. इसके साथ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस आपने मेरी वीडियो से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें. मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो वीडियो सारी देखें, सिर्फ आपके एक हफ्ते का काम है. पहले वो वीडियोस देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें. मैंने कॉन्सेप्ट पे काम किया है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो फिर ईटा के जो मेरी सीरीज़ है उसमें तमाम MCQs मैंने डिस्कस किए हुए हैं. दैन यू विल कम टू दोज MCQs फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर द असेसमेंट ऑफ योर लेवल, योर कॉन्सेप्ट. If your concept is clear, you will definitely be able to attempt all sort of questions, all sort of MCQs. If there is something wrong with your concept, then you can ask questions. And then very important thing जो मैंने कल के वीडियो में सिलेबस में डिस्कस किया था, use of preposition. I have discussed preposition in detail. आप वो वीडियोस देखें. फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे MCQs preposition बेस्ड किए हुए हैं. सिर्फ आई थिंक मैंने आर्टिकल की प्रैक्टिस नहीं करवाई. तो टुडे माई टॉपिक इज़ article based MCQs. How to use article, definite and indefinite article. You know there are two types of articles: indefinite articles A and N, and definite article D. Sometimes we pronounce this D, sometimes the. That is something else I have discussed in detail. How to pronounce this THE, where to pronounce D and where to pronounce the. I have discussed this thing in detail. But your concept should be how to use article, where to use article A, where to use article N, and where to use article D. So my videos there in basic English in parts of speech, that is the playlist. I will give the link of this video here in the description of this video. First, जो मैं suggest करता हूँ आपके लिए, I know better than you. That's obvious. I have a lot of experience of ETA preparation and NTS preparation. So first, watch my video. Your concept will be clear. I will give the link of that video, or you can go to the playlist, parts of speech, watch video, article. I have discussed article in detail. आपको this my guarantee that your concept will be clear. जो मैंने sounds के कहाँ पे N कहाँ पे बाज़ दफ़ा confusing होता है कि M A, वो जो हमें पढ़ाते हैं ना A I जो 5 vowels हैं, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. उस कॉन्सेप्ट आप सारी ज़िंदगी आर्टिकल को नहीं समझ सकते. दैट्स अ ट्रेडिशनल बोगस कॉन्सेप्ट. देयर आर 20 वावल साउंड्स. तो मैंने उसी वीडियो में समझाया हुआ है कि वावल साउंड्स होती क्या है, आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, वेदर द बिगिनिंग साउंड इज वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड. इफ द बिगिनिंग साउंड इज वावल, यू आर सपोज्ड टू यूज द आर्टिकल N. If the beginning sound is consonant, we have no concern with letters M A F A. We have no concern. You will see in these MCQs. For example, the word is honest. अब इसके स्टार्ट में तो H है, लेकिन he is an honest person. Why? ये नहीं कि बाद H की आवाज़ उससे मिलती है. We have no concern with any Urdu letter. We have to keep this thing in our mind that which sound is the initial sound of this word. When we say O, it's a vowel sound, the 20 vowel sound. तो मैंने identification बताई कि vowel sound होती क्या है. How will we identify that it's vowel sound? That's something very simple. So you have to keep this thing in mind that the beginning sound, the initial sound, ये concept आपको इस वीडियो को देखने के बाद मुकम्मल clear हो जाएगा. Then it will be quite easy for you to attempt to use the article. So let's get started. First watch that video, then come to this practice. MCQ number 1. UK is an important coalition partner of the US. Here you are supposed to use the article A, N or D, or no article you can say. So the answer is there in this sentence. UK is an important coalition partner of the US.
The way we have used here the US, the same sort of article will be there, because whenever we use such abbreviations, we use article the US. The UK is an important coalition partner of the US, right? So here it will be the article, the definite article the will be over here because it's an abbreviation. UK, US, NATO, इस तरह के जो abbreviations हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं article, definite article the. The next one is Ahmad Faraz is Desh of Urdu poetry. I think I have discussed already in discussing some MCQ जब वो mixed MCQs में कर रहा था. A Wordsworth, the Wordsworth or simple Wordsworth. What do you think? What is the correct option? Ahmad Faraz is Desh of Urdu poetry. A Wordsworth of Urdu poetry, the Wordsworth of Urdu poetry, or simply Wordsworth of Urdu poetry. There is a concept I have discussed already, I think, in one of my videos. So whenever we make proper noun common, we use the article the. The way we use article the for making common noun proper. Give me the pen. जब हम किसी common को proper करते हैं, give me the chair, the red chair. There are many chairs, but I need the red chair. You have many pens, I need the red pen. So when we make common noun proper, we use article the. Same is the case when we make proper noun common. Wordsworth is a proper noun, but here we are making it common. हम उसको आम कर रहे हैं, तो एक ही था वर्ड्सवर्थ, लेकिन दूसरा हम किसी को उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उस पर तशबीह दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं दिस आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल द. हियर इट विल बी Ahmad Faraz is the Wordsworth of Urdu poetry, right? So here we will use the article the. The next is she is dash most intelligent student of the class. It's very simple. Whenever we use superlative degree of adjective, we use the definite article the. She is the most intelligent student of the class. It's very simple. Whenever we use superlative degree of adjective, we use article, definite article the. The rent is 20,000 rupees a month. The month. Again, I think it's very simple. Here it will be the rent is 20,000 rupees a month. A month means per month. A for one, a month. The rent is 20. One thing that you must keep here in mind, जब भी हम ये इस तरह लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, तो फर्स्ट वी राइट रुपीज़, RS stands for rupees, then we write this amount. बट जब हम पढ़ते हैं तो इसका ये रूल है कि फर्स्ट वी विल रीड दिस अमाउंट देन रुपीज़. जैसे लिखे ऐसे नहीं पढ़ना, द रेंट इज़ रुपीज़ 20,000, दिस इज़ इनकरेक्ट. लिखेंगे इस तरह रुपीज़ बिफोर दैट अमाउंट, बट व्हेन विल रीड दिस इट विल बी द रेंट इज़ 20,000 रुपीज़ अ मंथ. एंड मंथ द मंथ नहीं होगा, here it will be a month. It's very simple. The next is he is dash MA. I have already discussed, just to give you a concept. Here we have to use a, an or the or the. He is a MA, he is an MA, or he is the MA. Here we have to keep this thing in mind, that which one is the initial sound, the beginning sound. When we say the word MA, it's a vowel sound. It's a vowel sound, and before vowel sound, it's the rule that we use article, a word that starts with a vowel sound, we use article N. And if a word that starts with a consonant sound, we use article A. Here it will be, he is an MA. क्योंकि ये starting sound जो है A, अब इसका concept क्या है, इसके लिए आपको वीडियो देखनी है. अब मैं दोबारा इसको इतना लेंथी नहीं देना चाहता, आप वीडियो देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सवाल साउंड क्या है, इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है. आमतौर पर बताया जाते हैं ए आई यू ट्रेडिशनल कंसेप्ट, उस एतबार से तो एम वावल में नहीं है, फिर क्यों एन यूज़ करते हैं. तो इसका आमतौर पर ट्रेडिशनल जो स्टाइल जो अप्रोच वहाँ बताया जाता है कि इसकी आवाज़ अलीफ से मिलती है. तो अलीफ का इंग्लिश से कोई तल्लुक़ नहीं है. वी हैव 20 वावल साउंड्स. Here there is a certain symbol for each and every vowel sound. I have discussed all the vowel sounds, my videos there. बस आप सिर्फ ये वीडियो देख लें,
आर्टिकल की, उसमें मैंने एक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है. Here it is, he is an MA. The next one is dash makes the word move around. Love, allow, or the love. So here it will be love makes. We can't say allow or the love. It's simply love makes the word move around. When we talk anything that represents the whole, so we don't use the article. The next one is the earth revolves around the sun, a sun, or simply sun. Again, one thing that you must keep in mind, ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स आप वहाँ मेरे इस वीडियो में देखेंगे. Whenever we use these sun, earth, इस तरह की जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, उनके लिए हम साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं द. जैसे द अर्थ, ऐसे द सन. जो जनरल चीज़ें हैं हमारे जो वर्ड में यूनिवर्सल चीज़ें हैं, उनके साथ हम द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन, इनके लिए हम द यूज़ करते हैं साथ. द लास्ट MCQ इज़ द मैन वॉज अरेस्टेड बाय डैश FPI ऑफिसर. FPI ऑफिसर, एन FPI ऑफिसर, द FPI ऑफिसर. तो ये कोई ख़ास हम बंदे की बात नहीं कर रहे, हमको उसको पर्टिकुलर नहीं बना रहे, तो हम ज़्यादा दी तो हो नहीं सकता. Same concept is there, the way I have discussed over here in MCQ number 5. Here FBI, when we say FBI, the first sound that comes out of our mouth, that is A, then fa, it becomes F. अब F तो vowel की लिस्ट में नहीं है, but we have no concern with letters or alphabets. We have to keep this thing in mind, that which one is the beginning sound. The beginning sound is A, then F, F, A. So here it is vowel sound, then here we will use N. The man was arrested by an FBI officer. I hope now the concept is clear. For more clarification, for more explanation of vowel sound and consonant sound, the use of article, the use of definite article and indefinite article, watch that video. You will see here, just at the end of this video, you will find here, almost over here at the end screen, and you can also find in the description link of this video that very important video, use of article. अगर कहीं से भी आपको समझ नहीं आई तो फिर आप चैनल पे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल की वीडियो देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर दोबारा आप इन MCQs की मदद से प्रैक्टिस करें. तो आर्टिकल प्रैक्टिस शायद मैंने नहीं करवाई थी. जनरल प्रैक्टिस इंशाल्लाह चलती रहेगी, वोकैबुलरी चलती रहेगी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स और मुख्तलिफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड. अब मैं नरेशन और पैसिव वॉइस पे आऊँगा, उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा. और इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपका ETEA की मुकम्मल तैयारी मेरे उस प्लेलिस्ट में, ETEA एंड NUST की प्लेलिस्ट में मौजूद है. जस्ट आई नीड योर कंसंट्रेशन, योर कीन इंटरेस्ट. If you are keen in learning, we can attempt all sort of questions just with the help of my videos. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.